गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे आमे सेल जंक्शन विषय स्टार्ट करथिले एवं पढ़िथिले एवं दुईटा प्रकार जंक्शन विषय मु ऑलरेडी पढ़ाई सारी। आज 3 नंबर जंक्शन जोड़ा होची कम्युनिकेटिंग जंक्शन विषय पढ़ेबी। आशा रखुची तुमको वीडियो पसंद आसीथिबो। जो माने भी नुआ अछो मो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिबी, तुम कि प्रीवियस क्लास देखि पारो। एवं आज आमे स्टार्ट करबा कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ता पूर्वरु जो माने भी नुआ अछो मो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद थे लाइक एवं शेयर करिवो। तो B.Sc सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम बहुत शीघ्र स्टार्ट होगापी जाऊँगी, जिते शीघ्र पाउच तुम कोर्स गुड़ाक कंप्लीट करनियो है। तो देखो कम्युनिकेटिव जंक्शन कौन, गैप जंक्शन इज द कम्युनिकेटिंग जंक्शन इन द एनिमल सेल। इन प्लांट सेल द कम्युनिकेटिव जंक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तेणु आम प्लाज्मोडेस्माटा या परे पढ़ा। बर्तमान आम कम्युनिकेटिव जंक्शन पढ़ुचु जोटा कि एनिमल सेल उपरे है। तो कम्युनिकेटिव जंक्शन और गैप जंक्शन allow the direct chemical communication between the adjacent cellular cytoplasm through diffusion without contact with the extracellular fluid है। तापर जो देखिबा हमें गैप जंक्शन विषय देखिबा है। तो गैप जंक्शन कौन देख डिस्कवर कर किए जेपी रेबल एंड द एमजे Karvonsky in 1967 and are used for the rapid communication. Gap junctions are small pore of 2 to 4 nm interconnecting two cells in order to pass smaller molecule or signal between the cell. Gap junction occurs as a patch between the cell like other cell junction. Gap junction are made up of the protein called the connexin. एटा को मन रखि दो कोथरे तयारी connexin type protein रे तयारी। Connexin is the 4 pass transmembrane protein. 6 molecule of the connexin are aligned in the parallel fashion to form the cylinder like structure. तो 6टा connexin molecule दरकार पड़ी था गोटे cylinder structure तयारी करबा पई हैला। 2 such cylinder form the adjacent cell are interconnected to form a channel called the connection. तो तापर दीटा जदि से प्रकार आमे जदि सिलिंडर को एका संगे मिसई देबा आउ सेमान को भीतर जो इंटर कनेक्शन होता है ताको कनेक्शन बोली कहा जाए हैला। व्हिच सर्व एज ए कनेक्शन सॉरी जंक्शन बिटवीन द सेल हैला, जोना हमें फिगर रे देखिबा को पाउछु हैला। देखो इनवर्टिब्रेट्स है ड्रोसोफिला मन को देखा द गैप जंक्शन प्रोटीन इज कॉल्ड द सार्किंग बी which belongs to the annexing family है। The size of the pore in the gap junction is however so small that only small molecules such as amino acid or inorganic ion are admissible, whereas the macromolecules such as protein are not admissible. In fact, molecules with a mass of less than 1000 जदि आम देखा डाल्टन pass through the gap junction. Gap junction serve as a medium for the communicating action potential in the electrically जोड़ा excitable cell such as the nerve cell. It is also responsible for the passing metabolic signals between the cell. For example, during fasting or starvation, where the blood glucose level is depressed है जो आम फास्टिंग बा भोकरे था से कौन ब्लड लेवलटा कौन है आम ब्लड ग्लूकोज लेवलटा कमी जाए। द सिंपाथेटिक नर्व एंडिंग सिक्रेट नर आड्रेनालिन से कौन होता है आमर जो सिंपाथेटिक नर्व अच्छी कौन होची संगे संगे नर आड्रेनालिन को सिक्रेशन करे which in turn stimulate the hepatocyte to break the glucogen स्टोर। संगे संग कौन करे ये नर एड्रेनालिन कौन करे संगे संग आमर जो हेपाटोसाइट को ब्रेक करके सेठू कौन करते ग्लाइकोजेन स्टोर को ब्रेक करि थाए हैला। दिस स्टिमुलेट द पास फ्रॉम वन सेल टू अदर बाय द गैप जंक्शन टू एनहांस द ग्लाइकोजेनोलिसिस जोटा कि आमर ग्लूकोसिंथेसिस को एनहांस करि थाए हैला।
Gap junction is also responsible for synthesization of the heart muscle contraction and the peristaltic movement of interstitial smooth muscles. The gap junction is through to play an important role in fertility रे भी important role କରିଥାଏ. In ovary, the oocyte is surrounded by the thick layer of ECM called the zona pellucida. आम जानिछु zona pellucida oocyte को outermost layer है. This zona pellucida is surrounded by the granulosa cell. और granulosa cell are interconnected by the gap. अर्थात एटा गैप जंक्शन रे तैयारी. Moreover, the granulosa cell are projected through the zona pellucida into a oocyte via the gap junction. Although the extra function is still unknown, maturation study revealed that the absence of gap junction protein result in the infertility. है तापर नेक्स्ट देखा आम गैप जंक्शन विषय आउ टे जाना. तो गैप जंक्शन आर हाईली कौन डायनामिक स्ट्रक्चर दैट कैन अंडरगो कौन कन्फर्मेशनल चेंज टू क्लोज और ओपन इन द रेस्पॉन्स ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर सिग्नल. फॉर एग्जांपल लो इंट्रासेलुलर पीएच एंड हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कौन करे रिड्यूस द पोर साइज है ऑफ द गैप जंक्शन. दिस इज ट्रू स्पेशली व्हेन द सेल आर डैमेज एंड द मेम्ब्रेन बिकम्स लिकी. जो मेम्ब्रेन लिक हो द न्यूरो ट्रांसमिटर डोपामाइन है इज द कौन एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑफ द गैप जंक्शन ऑफ द रेटिना. In response to the bright light stimulus, the dopamine restrict of the pore size of the gap junction in the neurons of the retina. This result in the stimulation of the cone photoreceptor which is responsible for the detection of the bright light. है से bright light को संग संग डिटेक्शन करि पारे है. तापर देखिए प्लाज्मोडेस्माटा जोटा कि गैप जंक्शन किंतु प्लांट सेल क्षेत्र रे है. तो प्लाज्मोडेस्माटा कौन बेसिकली से एका जिनस किंतु प्लांट सेल विषय है. तो इट इज ए ओनली इंट्रासेलुलर जंक्शन फाउंड इन द प्लांट. इट इज ए गैप जंक्शन एस्टाब्लिश्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सेल. Plasmodesmata is however structurally and morphologically differ from the gap junction in the animal cell. तो structurally और morphologically टिके से difference अच्छी. Plasmodesmata exist as a channel of 20 to 40 nm piercing in the cell wall, thus connecting the cytoplasm of the two adjacent cells. A narrow cylindrical protein structure called the desmotubule run along the channel and the interconnect with the smooth endoplasmic reticulum of the two cells. The function of the plasmodesmata is similar to the gap junction of animal cell. एक function है. The molecular weight cut of the plasmodesmata is more or less similar to the gap junction. Plasmodesmata serve as a mean of the communicating signal between the cell, including the passage and the gene regulatory protein between the cell. Sometimes plant virus and the virus RNAs are also spread among the cell via the plasmodesmata. Plant virus secrete protein which is in turn increase the pore size of the junction जोटा ट्रांसलेशनली टू गिव वे ऑफ द भाइरस जोटा भाइरसटा को गोटे जगार आ गोटे जगह को जीवाई सुविधा है कहीं पोर साइजटा बढ़ी जाए है. तो मेकानिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा इज कौन अननोन किंतु ता विषय अधिक मेकानिज्म विषय अधिक जना ना है. तो यहाँ हूँ प्लाज्मोडेस्माटार स्ट्रक्चर से दे देती है यहाँ को तुम लिखिदे पार. तापर देखा जदि ट्राइसेलुलर जंक्शन कौन ट्राइसेलुलर जंक्शन हूँ कौन सील एपिथेलिया एट द कॉर्नर्स ऑफ द थ्री सेल है तीन सेल जंक्शन है. ड्यू टू द जियोमेट्री ऑफ द थ्री सेल vertices the sealing of the cell at this site require for the specific junction organization that differ from the bicellular junction है.
बाइसेलुलर माने दुईटा सेलुलर जंक्शन थिला, ट्राइसेलुलर माने तीनटा सेलुलर जंक्शन हैला। इन वर्टिब्रेट ट्राइसेलुलर जंक्शन कंपोनेंट आर ट्राइसेलुलिन and the lipolysin stimulated lipoprotein receptor. in invertebrate जदि देखिबा component are कौन ग्लायोटैक्टिन एंड द अनाकोंडा हैला। तो एतकी हैला तार कंपोनेंट हैला। एडिशनली द बैरियर जंक्शन ट्राई सेलुलर जंक्शन आर also implicated the regulation of the cytoskeletal organization and the cell division रे भी काम करती है। in particular they ensure that cell divide according to the Hedwig rule. The in Drosophila देखिबा epithelium during the cell division tricellular junction establish physical contact with the spindle apparatus through astral microtubule। तापर देखो ट्राई सेलुलर जंक्शन जोड़ा टी जे सी है भूल देला टी सी जे हवा एक्सटर पुलिंग फोर्स ऑफ द स्पिंडल अपर्चर एंड सर्व एज द जियोमेट्रिकल क्लूज टू द डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये जगह देख तुम जो समारी अच्छी सेल जंक्शन तार समारीटा यहाँ देदेला। सेल जंक्शन होची कौन ऑक्लूडिंग एंकरिंग आ कम्युनिकेटिंग है। तो कम्युनिकेटिंग फिर जान गैप जंक्शन केमिकल सिनाप्सेस आउ प्लास्मोडेस्माटा जोटा प्लांट क्षेत्र में। तापर ताको देखिबा एक्टिंग फिलामेंट अटैचमेंट अच्छी इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट साइट अच्छी है। तो सेल टू सेल हेले एक्टिंग फिलामेंट अटैचमेंट रहा आउ जदि जोड़ा हूँ आम आडेसन बेल्ट रे पारबो किंबा सेल टू मैट्रिक्स हेले आम फोकाल कंटाक्ट रे हुए। आउ जदि एई जगह देखिबा हम इंटरमीडिएट फिलामेंट रे सेल टू सेल हेले डेस्मोजम आ सेल टू मैट्रिक्स हेले कोन हेमी डेस्मोजम है। तो यही जदि समराइज को जदि तुम पढ़ीदेव टिके जदि मुंडे जदि टिके आइडिया आसीଯିव सेठू तुम डिटेलटा तुम एक्सप्लेन कर जानी एटा बहुत क्रिटिकल एवं बहुत कॉम्प्लिकेट चैप्टर जोटा कि माने बहुत बोरिंग चैप्टर मध्य तो किसी गप टाइप ना बहुत टर्म अच्छी जोटा को मन रखा पड़ो है। तेणु तुम ताको समराइज करके निज भाषा रे जो प्रकार तुम जदि नोट करि पारुछ सेंती नोट करिकिना लिखिबो हला। तो आज पई तो एतिकी नेक्स्ट क्लास रे आमे गोटे नुआ चैप्टर पढ़िबा। तो यूनिट 1 तो हमर कंप्लीट हो गला जोटा हमर पेपर 4 रो यूनिट 2 नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। थैंक यू।